Hello, welcome to my channel. I'm Array Steve. Today I'm gonna discuss questions which is based on packing. So that we have discussed the text of the packing tomorrow, and today we're gonna discuss questions. So the first here, the part of the questions we're gonna discuss here, thinking about the text which is there right on your text book, so that you can open the textbook and see all these here. So that the first question here. We have how many characters are there in the narrative? There are four characters. Three characters are the human characters. One is animal here, and here in the bracket it says don't forget the dog. So we have here all total four characters, and four characters in them are Jerome K Jerome, the writer of this piece of writing, and Harris and George, two friends of Jerome K Jerome, and dog Montmorency, right? Here, the second question we have here, why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? Uh, because he was considering himself the proficient person in doing the packing, so that he preferred the packing, but it was not his attention. It was not his intention to do the packing. He was only superintending the two friends packing, but they particularly left all the thing there on the shoulder of Jerome K. Jerome, so that his intention was to boast the job, right? Here the third question we have: how did George and Harris react to this? Did Jerome like their reaction? They react positively to this packing. One cocked his leg on the table and seated himself on the easy chair, and he enjoyed his pipe, and the other lit a cigar and sat on the table, and so that Jerome, which was doing the packing, particularly didn't like their reaction. So that here the next question is, what was the Jerome's real intention when he offered to do the pack? Do the pack. His real intention while he was offering them to do the pack, not them, to himself, for making himself proficient in doing the pack. He was considering himself in that particular department, that he can do his job particularly very proficiently and efficiently, so that he his intention was there only to boast the job. But particularly the friend which he had there put whole the fear and responsibility on the Jerome's shoulder. Here the fifth question. What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? He asked, sorry, Harris said to the writer, to Jerome, that he had packed the board in or not. So he said to check him that how much proficient he is in packing, so that he waited till then when he strapped the bag and shut the bag and then strapped it, so that is why he wanna, according to me, he wanna check him, was he forgotten all the things, was his wit so quick to do the particular job, right? And after that, here we have the next question, that is, what horrible idea occurred to Jerome a little later? Uh, yes, he didn't know he had packed his brush in that particular bag or not. It was a very horrible, idea which occurred to Jerome a little later
after thinking that he had packed the boot in or not. The next question we have, question number 7. Why did Jerome have to reopen the bag? Jerome have to reopen the bag uh, because he forget to put the tobacco pouch in it, right? He forget to put the tobacco pouch in it, so that he had to reopen it again. Okay, we have here the question number 8. Does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? This is a very important question. His uh, ambition in his life was to get in a way and be sworn at. He wanted to create a confusion whether Harris and George, reached out for everything and his old and dump now scam in their way. So that his highest aim was to get somebody stumble over him and curse him. So that at that, when he get all these things, he thought that his day had passed very better. And now here the next question is, of the three, Jerome, George, Harris, who do you think is the best or worst packer? Support your answer with the detail from the text. If we will take first Jerome. Jerome was the worst packer. Worst packer. George was also worst packer, and Harris was also worst packer. But in George and Harris, the super intelligent packer was Jerome. He didn't, break anything. But when Jerome and when George and Harris started packing, they pack. They started their packing at breaking the cup, so that we can here consider with the support of the text that the worst packer were George and Harris, and Jerome was not so worst packer, right? Here the question number 10. How did the Montmorency contribute to the packing? He created the confusion there. He considered the lemon to be red and started killing them, so that he was a big, creator of confusion there in that packing, which were done by, or which was being done by the George and Harris, right? So that here the last question: do you find this story funny? What was the humorous element in it? Uh, Pick out at least three, three, and think about what happens as well as how it is described. Yes, here it is a humorous story, a very funny story, and in this story we have the four characters which are acting very, strangely. And first, the funny thing is that the writer Jerome himself started doing the packing, and he forget to pack the things in a right place. And this is a very humorous story, and we started laughing here. And then Harris and George also make packing with the breaking of cups, and there was a little bit of confusion. They split the salt over the ground, over the floor, and then they started putting the sweeper into the kettles, which was not possible to put it in the kettles. And then they put the sweepers there, and then they start searching about that, and finally get on the back of each other, so that it was a very funny things there also. And the last funniest thing which I gonna share according to the text is that it was Montmorency. He was also they are making a lot of confusion in their packings, so that he considered two or three lemons to be red and started killing them. So the story, which is based
on the humorous elements, and it is particularly a very funny story, right? So that here this portion thinking about the text comes to an end, so that we will here see the uh, language work, so that we can see here what is language work. We will discuss it also here. Here you have to open the book. I will cut it and paste here or here this particular thing on the screen. It will be pasted, so that but you have to open your books and see there. Here the first part of this language work is match the words phrases in the column A with their meanings in the column B. So that we have here solving, chaos, rummage, scrapped out, stumble over, accomplish. So that this is the A part, and we have to move toward the B part. In the B part, we have quarrel, are in agreement, and remove something from inside and other thing using a shop tool. Right, so here strange, mysterious, difficult to explain, finish, successful, achieve, and search for something by moving things around hurriedly and carelessly. And here we have in the B part complete confusion and disorder. Right, first is here solving. So solving किसके साथ मिलेगा? We have to match it. Solving, and it is in a column A, and we have to match it with a column B. What is match? Match का मतलब होता है जोड़ना, to make a connection, so that उसको हम मैच कह सकते हैं. मैं उर्दू बीच में ऐड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है. हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज और ये जो मतलब मीडियम है उर्दू से ही हम समझाते हैं. आई एम सॉरी कि मैंने मोस्टली इसमें इंग्लिश इस्तेमाल की है, ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं. तो यहाँ पे सेल्विंग का क्या मतलब होता है? सेल्विंग का मतलब होता है मतलब एक मेहनती वाला काम जिसमें मेहनत ज़्यादा लगी हो, वो स्लेव से निकला है. स्लेव का मतलब होता है नौकर, और सेल्विंग का मतलब होता है जिसको हम हार्ड वर्क बोलेंगे. तो यहाँ पे आपको इस पार्ट में कहीं पे हार्ड वर्क मिलता है. हाँ, आप देखेंगे अ स्ट्रेंज क्वारल और एन आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा. रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड एंड अदर थिंग यूजिंग अ शार्प टूल नहीं आएगा. स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन नहीं आएगा. फिर आपका क्या आएगा? उसके बाद आपका फिनिश, सक्सेसफुल, अचीव नहीं आएगा. सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स नहीं आएगा. मूविंग थिंग्स अराउंड हरिडली और केयरलेसली ये भी नहीं आएगा. राइट, कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर ये भी नहीं आएगा. हाँ, यहाँ पे दूसरा है फॉल, स्टेप awkwardly while walking, ये भी नहीं आएगा. यहाँ पे आएगा हार्ड वर्किंग. हाँ, तो फर्स्ट जो है हार्ड वर्किंग के साथ आएगा. चलो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, जो आपकी डिक्शनरी में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका पहले से आपको इसकी मीनिंग बोल दूं. क्योस. क्योस का मतलब होता है कन्फ्यूजन, जिसमें थोड़ी घबराहट हो, डर सा हो, उसको हम क्योस कह सकते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं क्वारल और इन आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा. रिमूवल समथिंग फ्रॉम इनसाइड एंड अदर थिंग यूजिंग अ शार्प टूल नहीं आएगा. स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ये आ सकता है. नहीं, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वो होता है क्या बोलते हैं कि काफ़ी हद तक डरोना सा, तो नहीं आएगा. ये फिनिश, सक्सेसफुल, अचीव नहीं आएगा. सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हरिडली और केयरलेसली नहीं आएगा. हाँ, ये आएगा. कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर ये आएगा. मैंने बोला कंफ्यूजन इसमें होता है, और दूसरा है रोमेज. चलो देखते हैं रोमेज. तो यहाँ पे रोमेज का मतलब होता है कोई चीज़ तलाश करना बड़ी जल्दी से और चीज़ों को बिखर के रख देना, उसको हम रोमेज कह सकते हैं. तो यहाँ पे अक्वारल और एन आर्ग्यूमेंट तो नहीं आएगा. रिमूव समथिंग फ्रॉम द इनसाइड ये भी नहीं आएगा. स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ये भी नहीं आएगा. सर्च फॉर समथिंग, हाँ ये आ सकता है इसमें. सर्च फॉर समथिंग बाय रिमूविंग थिंग्स अराउंड हरिडली और केयरलेसली ये आ जाएगा. फिर उसके बाद हमारा जो है स्क्रैप आउट. राइट, स्क्रैप का उर्दू में मतलब होता है
खरोचना, किसी चीज को खरोच के निकालना। तो अब यहाँ पे स्क्रैप का क्या मतलब आएगा, जैसे यहाँ पे है, जैसे क्या आ सकता है यहाँ पे, हाँ ये आएगा स्क्रैप। स्क्रैप का क्या मतलब, नीचे आ जाएगा, नीचे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे किताब के नीचे वाली पार्ट में, तो उसमें आ जाएगा, अरे ये तो ऊपर वाली ही लाइन में है, जो पहला वाला पेज है उसमें ही है, उसमें दिया हुआ है ये। तो उसमें ये कहता है कि रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड एंड अदर थिंग यूजिंग अ शार्प टूल, तो उसको हम जो है स्क्रैप बोलते हैं। यानी कि हमारे पास वो होता है ना जिससे हम बर्तन जो है वो करते हैं साफ, तो उसको हम स्क्रैपिंग टूल कह सकते हैं। स्टम्बल ओवर क्या होगा, यानी कि कोई awkward तरीके से चलना, राइट। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्टम्बल का मतलब होता है यहाँ पे किसके साथ, ये जो है लास्ट वाले पार्ट के साथ आ जाएगा, फॉल और स्टेप awkwardly while walking, राइट, ये वाला इसके साथ आएगा। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है आगे जो आगे आ गया हमारे पास एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। तो ये एकम्प्लिश जो है वो किसके साथ आएगा, लेट्स सी कि एकम्प्लिश जो है वो किसके साथ आ सकता है, इसका मतलब होता है पूरा करना। तो हम हाँ फिनिश, सक्सेसफुल और अचीव के साथ आ जाएगा। अब हमारे पास जो है लास्ट के दो हैं अनकनी। अनकनी का क्या मतलब है, अनकनी का मतलब हो गया जैसे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एक्सप्लेन करना, तो ये किसके साथ आ जाएगा, ये जो है स्ट्रेंज मिस्टीरियस डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन के साथ आएगा। और लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है, टू हैव और गेट इनटू अ रो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो है मतलब लड़ाई करना, तो ये आ जाएगा आपके पहले के साथ अ quarrel और एन आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह से हमारा जो है लैंग्वेज वर्क अभी खत्म होता है। लैंग्वेज वर्क में ही हमारे पास आगे वाला है, यूज द फॉलोइंग phrases in your own sentences so that we have to complete it, जैसे कि toss for, toss about, fall into, fall out, search for, scrap out और mess about, इनके बारे में हम देखते हैं। तो इनके बारे में आपने जो है वो यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ दीज। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉस फॉर। टॉस का मतलब होता है के लिए टॉस करना, टॉस अबाउट के बारे में टॉस करना, फॉल इनटू गिरना और गिर पड़ना, फॉल आउट गिर पड़ना, सर्च फॉर तलाश करना, और स्क्रैप आउट का मतलब होता है खरोचना, और मेस अबाउट का मतलब होता है छेड़खानी करना, या आप इसको कह सकते हैं मेस जो है खाने को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब ठीक करना, छेड़खानी करना, किसको सताना, दैट इज कॉल्ड द मेस अबाउट। तो इनके जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस अ बिट सो दैट द फर्स्ट सेंटेंसेस व्हिच वी गोना मेक, टॉस पर, वी आर गोइंग टू डू द टॉस फॉर रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन। हम इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए टॉस कर रहे हैं, है ना, टॉस, हु विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, वी विल टॉस फॉर इट, राइट। टॉस अबाउट, टॉस अबाउट का क्या मतलब है, यहाँ पे द लेक्चर सीरीज फॉल नेचुरली इनटू 3 पार्ट्स, राइट। यहाँ पे टॉस अबाउट का क्या मतलब है, ही kept टॉसिंग एंड टर्निंग अबाउट इन अ बैड एट नाइट, राइट। इसी तरह से फॉल इनटू, वी प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम एंड ही अल्टीमेटली फॉल इनटू इट। उसके बाद हमारा जो है फॉल आउट, फॉल आउट का क्या मतलब है, द मैन फॉल आउट क्विकली आफ्टर द मार्च, राइट। सो यहाँ पे सर्च फॉर, वी आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो यहाँ पे स्क्रैप्ड आउट, स्क्रैप्ड इट आउट विद योर हैंड, तो यहाँ पे फिर है मेस अबाउट। तो मेस अबाउट का क्या मतलब है, मेस अबाउट का मतलब है कि यहाँ पे ही मेस्ड अबाउट विद द टीवी, राइट। और उसके बाद don't mess about these files, right. So it was all about I'm saying goodbye. Please subscribe the channel, share all my videos और अपने फ्रेंड्स को बोल दो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So that I'm saying goodbye.